कि लोगों को देख के अपने उनके साथ में दुखी हो जाते हैं या लोगों को देख के उनके साथ में खुश हो जाते हैं। तो ऐसे सब टाइम में जब आपके पास में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज आती है सब जगह से, it is very difficult to stay positive yourself. And when you get content like this, what Ruchi has sent yesterday, the meditation and all, तो उसके बाद में जब आप वो सुनते हैं तो वो ना एक क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग की तरह वो आपको मेडिटेशन पूरा हेल्प करता है कि नहीं, इट इज नॉट डार्क ऑल ओवर, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी ब्राइट व्हिच यू कैन गो हेड विद। और ये सब चीजें आपको बहुत अंदर से एक मोटिवेशन देती है। उसी तरह हम और रुचि कभी भी डिसाइड करते हैं कि भाई और कुछ नहीं, एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट बाय डूइंग द प्राणायाम, बाय डूइंग द योगा, बट सिंस वी ऑल आर हियर टुगेदर, एक को साथ में अगर 5 मिनट भी मिलके खाली एक को रिलैक्स ब्रीदिंग कर लेते हैं ना, तो पूरी की पूरी बॉडी को अपने एनर्जाइज और रिजुविनेट कर देते हैं। तो अगेन टुडे वी विल डू द सेम थिंग, थोड़ा सा सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, बस खाली डीप ब्रीदिंग अंदर लेंगे बाहर छोड़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने अपने क्लास में हम लोग ने वो किया था अनुलोम विलोम, तो लोगों ने कहा था कि वो करते हैं, तो हम बोला ठीक है, everybody practices something, but this is one small practice which we feel to start a day is very good. So I'm sharing my music. It is again the same music on which you just have to breathe in and breathe out. खाली अपने बोलते ना, we are going to talk to ourselves, अपने दिल पे हाथ रख लेंगे, जब ब्रीद इन करेंगे ब्रीद आउट करेंगे तो एक 2-4 ब्रेथ्स या 5 ब्रेथ्स के बाद में अपने को अपना वो जो we will be able to hear our heartbeats also. That is the time we will understand, yes, we have synchronized with the body ourselves. And वो जब वो heartbeat सुनने लग जाओ तो आप एकदम उसके बाद में just feel that the pure oxygen which you are taking from the atmosphere which is free for us, उसके लिए हमको कैसे gratitude देना है। जो हवा हमको फ्री में मिल रही है, कल शेयर भी किया था कि कोई ने कि भाई उनको वो जो कमर का दर्द था और जो पैर का दर्द था वो एकदम भूल गए हैं, बिकॉज शी स्टार्टेड गिविंग ग्रेटिट्यूड टू द एयर विच इज फ्री। तो आज हम लोग सिर्फ नॉर्मल डीप ब्रीदिंग ही वापस करेंगे एंड वील डू इट फॉर जस्ट 3-4 मिनट्स 5 मिनट्स मैक्सिमम, एंड लेट्स कम इन सिंक्रोनाइजेशन विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हाउ वी कैन कोप अप विद ऑल दिस नेगेटिविटी। प्योर ऑक्सीजन लेके खुद को तो कम से कम एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस हम लोग स्वस्थ है, हम लोग मस्त है। ओके, आई एम शेयरिंग द म्यूजिक। एम आई ऑडिबल? ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू सिट आराम से स्ट्रेट, एकदम पोस्चर बैक विल बी स्ट्रेट, ताकि वो हवा आराम से अंदर जाए, लंग्स तक जाए, लंग्स को फिल करके हार्ट में। द कंप्लीट प्रोसेस गोज very smoothly. Just put your hand on your heart and we will do some normal deep breathing. Breathe in, breathe out. सांस अंदर ले, सांस छोड़े, सांस अंदर ले, सांस छोड़े। हवा के लिए जो हमें फ्री है, उसमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट है, जो हमारे लंग्स फिल्टर करके हमारे हार्ट को भेजते हैं और वो हार्ट उसे अपने ब्लड में मिला के बॉडी के हर एक पार्ट तक भेज रहा है। ब्रेन
तक जा रहा है वो ब्लड अपना, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो रही है, ब्रेन सब बॉडी पार्ट्स को सिग्नल्स भेज रहा है। सबसे पहले वो अपने चेहरे पे भेज रहा है और बोल रहा है भाई एक स्माइल कर दो, खुश रहो, हम आपके साथ हैं। जितनी भी नेगेटिविटी है दुनिया में उस पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, जो पॉजिटिविटी है उस पे फोकस करो। Now it is sending it to your arms, your upper back. वापस से आपके दिल के साथ ही बात कर रहा है आपका दिमाग कि मेरे साथ साथ तुम भी यार 24 घंटे चलते हो, कोई रेस्ट नहीं लेते हो, थक तो नहीं गए ना। तो दिल से एक ही आवाज आई, जब मेरे पास में इतने सारे प्यारे लोगों का साथ है तो मैं क्यों थकूंगा। I am also smiling. I am giving my 100%. Don't worry. बाकी के बॉडी पार्ट्स को बोलो कि कंसंट्रेट करे और 100% ले मेरे से। लंग्स भी बेचारा पूरी रात दिन पंप इन पंप आउट करता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बोलते ना जिसको कोई रेस्ट नहीं है और फिर भी उसका कोई कंप्लेन नहीं है, तो उसका तो ग्रैटिट्यूड ज्यादा बनता है। आज मदर्स डे है, मदर्स को तो ग्रैटिट्यूड पहले बनता है बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव ब्रॉट अस इन दिस वर्ल्ड, इस सुंदर से जहां में हमको लेके आए हैं। वो सब लोग अपने मन ही मन में अपने माँ को धन्यवाद 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 करें। आप में से कुछ लोग खुद भी माताएं हैं, तो जब आपके बच्चे आपके लिए कुछ स्माइल के साथ में हैप्पी मदर्स डे विश करते हैं तो कई बार तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि व्हाट अ फीलिंग। बच्चा, एक बच्चे का हक जब वो आपके आके गले मिलता है और बोलता है मम्मी आई लव यू, माँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। दिस इज टुडे वी आर शेयरिंग इट विद आवर मदर्स एंड आवर चिल्ड्रन। दिल धड़कने लगा है, जरा तेजी से धड़क रहा है क्योंकि आज एनर्जी अलग है उसके पास। जस्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग, पूरा का पूरा ऑक्सीजन आपके पैरों तक चला गया है। रुचि के बोलते ना वो एनर्जेटिक लुक का एक रीजन ये भी है कि शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। She is full in gratitude. वो gratitude में डूब गई है ऐसा लगता है। So thank you Ruchi. Our gratitude to you also. चलो सब लोग रिलैक्स कर लो क्योंकि किस तरह 5 मिनट बीत गए मालूम भी नहीं पड़ा। Deep breathe in, breathe out, relaxedly breathe in, breathe out. Last time, आराम से एक सांस ले और छोड़े। Thank you everyone. Thank you. Thank you, Bhaiya. That was beautiful. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you so much, everyone. Yes. So today we are going to talk about some people in our lives जो थोड़े बहुत negative हैं.
ओके या उनके बारे में बात करेंगे जिनके साथ में हमारी थोड़ी बहुत खिटपिट चल रही है. रिमेंबर कल हमने जो बात किया था अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट yesterday we gave gratitude to 3 of our relationships जो अभी बढ़िया हैं but we want to make it even better, so we keep their photograph in front and we write. I had told more than 5 things, so at least 10 things that you're grateful for to these relationships so that they become even more beautiful. But let's be practical. Sometimes we do have people around us जो negative होते हैं और जिनकी energy हमें भी affect करती है, right? So how do we handle such negativity and how do we use the power of gratitude to change that around? Today we are going to be talking only about that. And if time permits, we might just go to the next level, but otherwise we will definitely be covering this today. So chapter today is on magically heal your negative relationships. Okay. And I will start by straight away reading the chapter and then we will give you more explanation around it. Okay. So the magical way out of नेगेटिविटी. इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके चारों तरफ हर समय लोग पॉजिटिव रहेंगे, आपके चारों तरफ नेगेटिव लोग भी रहेंगे. उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखो. एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, बट आई एम सेइंग कि करते करते हैबिट होते होते इट बिकम्स पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत आसान होएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज पॉसिबल आफ्टर यू कीप प्रैक्टिसिंग इट इनफ. Okay, a thankful person is thankful under all circumstances. So ऐसा नहीं है कि हम चूज करेंगे कि आज अगर खाना अच्छा बना तो हम आज ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, कल अगर कुछ 19-21 हो गया खाने में तो हमें गुस्सा आ जाएगा. नहीं, no matter how the food is made, I am always grateful that I am eating the food. So no matter जो भी circumstance होए, उस समय ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत बहुत जरूरी है. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. तो ये सिर्फ negativity केवल relationship के लिए नहीं है. It can be अगर आपकी financial कोई pressure है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या अगर कोई problem है आपके job में, या relationships में तनाव आ रहा है. One prime reason is क्योंकि बहुत time तक we have taken that relationship for granted and therefore over a period of time अब क्योंकि आपने उसको granted लिया है या उसमें gratitude नहीं है, अब आपको समझ आ रहा है कि problems हो रही हैं. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return. See the important words over here. जहाँ पे हम ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब हम withdrawal ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ हमारे deposits नहीं हो रहे हैं. और जहाँ बहुत सारे withdrawals होंगे, तो वो bank balance negative में जाएगा ही जाएगा. And we stop the magic from happening in our lives. Just as giving thanks to others will always lead us to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. जहां हमने deposit ज़्यादा करे, वहां हमारे बढ़ोतरी होगी हमारे बैंक बैलेंस में. जहां पे हमने withdrawal ज़्यादा करे, वहीं पे we will end up making more of a negative bank balance and not a positive one. So are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Very, very important. हम अपने body को gratitude कब देना शुरू करते हैं? जब कुछ चीजें हमारी life में या हमारी body में गड़बड़ होने लगती है. जैसे ही थोड़ा कहीं पे pain शुरू हुआ, तब हमको एक indication मिल जाता है कि बहुत time तक मैंने अपने body को gratitude नहीं दिया है. तो this is an indication to me कि अब whether I'm feeling good or I'm not feeling good, I will still give a lot of gratitude to my health. And that is why the gift of health is keeping me alive is a constant reminder. हर समय उसको देख कर हमें खुद को याद में रहना चाहिए कि हमारी तबीयत जब अच्छी होए
तब और भी ज्यादा ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है उसको और आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो वो और अच्छी होती जाएगी। और जैसे ही कोई इंडिकेशन आया, जैसे ही सर में दर्द हुआ, हाथ में दर्द हुआ, पैर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, इट इज अ रिमाइंडर that you are not giving gratitude for your health. Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful to pay for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are प्रॉब्लम्स? अब 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, जब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आपके घर में, आपके आसपास में, आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने, आपके बच्चों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके इन-लॉज ने, आपके स्पाउस ने, आप उसका बखान कितने लोगों से करते हो? बट जैसे ही कुछ गड़बड़ हुई, आप फोन उठा के 10 जनों को फोन करके बोल देते हो। आज मैं इतनी परेशान हूँ मेरी बच्ची से कि उसने ना तो रूम साफ किया, ना टाइम पे उठी, ना खाना में हेल्प किया, कुछ नहीं किया। ये बात तो मैं 10 जनों को बता देती हूँ, बट जिस दिन वो उठती है टाइम पे, पूरा अपना कमरा साफ करती है, हेल्प करती है मेरे को किचन में, पढ़ाई में अपना ध्यान देती है, मैं कितने जनों को बोलती हूँ? Hardly anyone. Do we call up people? Now your ratio has to completely change. Sorry, 1 second. I just request everyone, keep your microphones on mute. Yeah. So from today, the ratio has to change. When somebody does good for you, you talk more and more about that, because वहाँ पे आप अपनी energy ज़्यादा दे रहे हो. And wherever your attention goes, your energy flows, and your vibrations will change. And जैसे ही कोई चीज गड़बड़ हुई या बच्चे ने कुछ नहीं किया, 10 जनों से बखान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. So how much are you sharing and with whom are you sharing? आप हर एक जन से बात कर रहे हो कि आप खाली अपने करीबी 1-2 जनों से बात करके अपना मन हल्का कर रहे हो? मन हल्का करना अलग हो जाता है, उसी बात को 25 जनों में घोट घोट के बोलना, जिसे हम एक्चुअली गॉसिप भी बोलते हैं, वो बात अलग हो जाती है. सो कीप इन माइंड, आपकी कोई खटपट हो रही है और आपने अपने सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड से बात करी, या आपने सिर्फ अपनी मदर से बात करी, या आपने सिर्फ अपने सिस्टर से बात करी, या अपने हस्बैंड से बात करी, या अपने चाइल्ड से बात करी, जिससे 1 जन से 2 जन से बात करी, वहां तक आप अपना मन हल्का कर रहे हो. बट जैसे ही उस बात को लेकर जिसने भी फोन किया आपको, उसको आप बोल रहे, पता है आज तो मेड ही नहीं आई, सारा काम मेरे को ही करना पड़ा किचन में, कोई भी घर में हेल्प भी नहीं करता है. अब हर एक जन जो आपका फोन उठा रहा है, उसमें ये प्रोपेगेंडा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज देन यू आर ओनली मैग्निफाइंग द प्रॉब्लम. whatever you are going to look at very, very deeply, that will get magnified more and more. So you have to be very careful कि आप किससे बात कर रहे हो अपने पॉजिटिव के बारे में, और किससे बात कर रहे हो आप अपने नेगेटिव के बारे में. So are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? And there are statistics to show how many people die in their sleep. So every morning when you wake up, and we will be doing this chapter which is called Magical Mornings, जहाँ पे उठते के साथ आप एटलीस्ट 10 मिनट तक सब चीजों के लिए केवल थैंक यू ही बोलो. एंड दैट इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट लेटर. Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. बहुत बहुत सिंपल है. आप कंप्लेन ज्यादा कर रहे हो तो आपको वैसी सर्कमस्टेंसेस भी मिलेंगी जहां पे कंप्लेन करने के मौके और है. और अगर आप हर चीज में बोल रहे हो ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये इन्होंने मेरी इतनी इसमें मदद कर दी, उसमें मेरा चीज काम करने लग गया, the more you will start giving out that positivity, you will start receiving opportunities for that to keep happening in your life.
If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, spouse, family, friends, stranger, bills, economy, cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. Remember, आप जितना complain कर रहे हो उतना ही वो negativity आपकी पूरी energy body में आ रही है. And what is the universe going to pick up? कि अच्छा इसके energy body में यही signals हैं, उसको चाहिए ही नहीं कि उसका रेफ्रिजरेटर ठीक से काम करे, तो लो भाई, कल रेफ्रिजरेटर काम नहीं कर रहा था, आज माइक्रोवेव काम नहीं करेगा. सो दिस वे यू विल कीप अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. बट इफ यू टेल योरसेल्फ, अच्छा चलो भाई 15 साल तक दिस रेफ्रिजरेटर हैज सर्व्ड मी, शायद लगता है अब इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे मैकेनिक को बुला के इसे ठीक करा लेना चाहिए. सो व्हाट आर यू डूइंग ओवर देयर? First, you have given gratitude to your refrigerator कि 15 साल तो it has served you, it has helped you, it has made life so simple for you. First, you have given the gratitude for that, and then you have said, अच्छा चलो ठीक है, अब इसका क्या solution है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं. बट अगर आप वहीं बैठे हो और वहीं आप वही चीजें बोलते जा रहे हो कि अरे ये गया, अब तो काम कैसे चलेगा, रेफ्रिजरेटर, आजकल की तो कंपनीज ही ऐसी आती हैं, पहले के जमाने के तो रेफ्रिजरेटर्स ऐसे थे कि वो 20-20 साल चलते थे, आजकल तो कंप्रेसर्स की क्वालिटी ठीक नहीं है. यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आउट इन द यूनिवर्स. सो लो भाई, पहले आप रेफ्रिजरेटर का कंप्लेन कर रहे थे, अब आपका माइक्रोवेव या अवन या हैंड मिक्सर या मिक्सी या जो भी है, कुछ ना कुछ और वहां गड़बड़ होएगी ही होएगी. ऐसा नहीं है कि it will change and become better. Now you understand that complaining negative thoughts and words and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. Now this is a very very important word कि how long have you been in gratitude. So कुछ दिन practice करके, कुछ दिन नहीं practice करके, वो consistency नहीं रखकर negative चीजों में बहना बहुत ही आसान है. Positivity की तरफ रहना can sometimes be a struggle because you are struggling and swimming in the upward direction. अगर कोई नदी का बहाव नीचे की तरफ है, so it is more comfortable to you to go with the flow, but to keep yourself steady and to go against the flow is difficult. But even if you can't go against the flow, आप अपना steadiness तो रखो ताकि आप flow के साथ में negative नहीं बनते जाओ. It's impossible to be negative when you're grateful. It's impossible to criticize and blame when you're grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. So अब क्या करना है, जो भी negative situations हैं आपके आसपास या जो भी negative people है आसपास, उनमें इतनी positivity और उनको इतना gratitude देना है कि वो भी अपने आप positive होने लग जाएंगे. और अगर आपको लगता है कि वो changes आपको नहीं दिख रही हैं, तो it is also because हमने उतना gratitude long enough नहीं दिया है. So we have to keep being on the path of it, keep striving, keep trying, and yes, it can get tiring sometimes. कई बार अपन को लग सकता है कि कितना करो और कितना करो, but जब तक आपको लगता है कि वो situation change नहीं है, वो आपके ऊपर है. आप कितना चाहते हो कि वो इंसान बदले या वो सिचुएशन बदले. अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके लिए, तो आप उतना ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते चले जाओगे फॉर दैट. और अगर नहीं है, तो यू विल ऑल्सो लर्न टू एक्सेप्ट देम द वे दे आर. एंड देयर वाज अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला दैट वी लर्नड, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट फॉर्मूला, टॉकिंग अबाउट इट वेरी सून. बहुत ही अच्छी सी एक मूवी थी कॉल्ड Pollyanna, and a lot of y'all as participants have watched this movie. It's a Disney movie जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, और उसके माँ बाप गुजर गए हैं और अब वो अपनी मासी के साथ रहने आई है. She's come to stay with her aunt, and the aunt is very very strict. She keeps her in a very very regimented thing कि 6 बजे उठना है, 7 बजे नाश्ता, 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये, 10 बजे ये. So her life has completely changed. But
this girl plays a game called the Glad Game. And to have the time, please watch this movie again. It is available on YouTube. For the link, it is there in our previous groups. We'll try and post the YouTube link on this group also. It's a beautiful movie where this child is constantly saying, I'm so glad. अगर उसके आंट आ गई एंड उसने बोला कि तुमको 6 बजे ही उठ के खाना खाना या 6 बजे ही उठना है, तो शी सेज आई एम सो ग्लैड, इसी बहाने आई विल बी एबल टू स्मेल द फ्लावर्स, आई विल बी एबल टू वॉक इन द गार्डन. जो भी उसके लाइफ में होता है, शी लुक्स एट इट एंड सेज आई एम सो ग्लैड. सो मच सो कि ये एक छोटी बच्ची 13-14 साल की बच्ची वो पूरे विलेज को, वो जहाँ पे उन लोग रहते हैं वहां के सारे बड़े बुजुर्ग को ये ग्लैड गेम सिखा देती है. सो शी कीप्स टॉकिंग अबाउट आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड. सो पता चलता है कि पूरा विलेज ही इसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया है. सो इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी एंड आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट हैपेंस इन द क्लाइमैक्स या व्हाटएवर एल्स, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू फाइंड समथिंग पॉजिटिव in every situation. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative situation. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's movie Pollyanna featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. और उसी जगह पे solutions आने लग जाएंगे जब आप ये glad game practice करोगे. So कल हम बात कर रहे थे about having a day of no complaints. So how about making this a day of no complaints plus glad game? So Sunday के Sunday, if we say कि संडे के दिन तो मैं किसी चीज के बारे में कंप्लेन करूंगी ही नहीं, और साथ में संडे के दिन मैं ग्लैड गेम खेलूंगी. सो व्हाट इज द ग्लैड गेम? कुछ भी होएगा, मेड सर्वेंट आई नहीं आई, आई एम सो ग्लैड अब मैं आज अपने हाथों से अपने फैमिली को बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हटके खाना खिलाऊंगी. आई एम सो ग्लैड कि मेड नहीं आई, तो चलो अब मेरी बच्ची या बच्चे या जो भी है घर में, उनको भी एक मौका मिलेगा घर का काम करने के लिए. सो नाउ हाउ आर यू गोइंग टू प्ले दिस गेम? That is what is very, very important. And they go hand in hand. जैसे ही आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे, वहीं पे आपको कोई भी चीज में, नेगेटिव चीज में कुछ अच्छा ढूंढने का मौका भी मिल जाएगा. Okay, so this is the combination of no complaints and playing the glad game. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to the same with the magical power when he said, and these are Gautama Buddha's words, let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. If we didn't learn a little, at least we didn't get sick. If we got sick, at least we did not die. So let us all be thankful. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उठो और कुछ ना कुछ चीज के लिए थैंकफुल रहो कि चलो भाई और कुछ नहीं तो मैंने थोड़ा सा ही सीखा, चलो मैंने कुछ नहीं सीखा तो मैंने एटलीस्ट मैं बीमार तो नहीं हुई, अगर मैं बीमार भी हो गई तो चलो एटलीस्ट मैं मरी तो नहीं. So there's always something to be glad about. So let Buddha's words be your inspiration, and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. So today we are going to look at one relationship जिसमें थोड़ी बहुत खटपट हो रही है और आप चाहते हो कि आप उसे improve करो. So उस एक relationship के लिए या उस एक situation के लिए you will write down 10 things that you're grateful for. I know it can be challenging to begin this practice. So आसान नहीं होएगा. Definitely इसमें कुछ ना कुछ आपको अड़चने आएंगी, आपको मुश्किल लगेगा. But I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer
or in your gratitude journal. So that is what is going to be the task for today, that you think about one person or one negative situation, and in that negative situation look for 10 things to be positive for. Now, for example, we've all gone through the pandemic once. Now we are repeating ourselves in the pandemic. सब काफी जगह पे second time around lockdown announce हो गया है. तो now what can I be grateful for? कि पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि life in a lockdown कैसे होएगा. But now I am prepared. So what happened was last year it came unannounced. We had no idea what a lockdown means. हम कभी अपनी life में कर्फ्यू में नहीं रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था कि जो चीजों को हम for granted लेते हैं कि आज चलो मन किया बाहर जाके खाना खा लिए, आज मन किया पिक्चर देख के आ गए, आज मन किया इन दोस्तों के साथ में कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए. तो these were things that we had taken so much for granted, but that has changed around now. And we were not prepared last time for it. But this time we are definitely prepared. So we know ki how will life be in a lockdown. So now in a prepared state, what am I going to do? अगर 14 दिनों का लॉकडाउन है, तो 14 ऐसे कौन से नए स्वादिष्ट खाना मैं बनाऊंगी जो मैं बहुत टाइम से सोचती आ रही हूँ कि मुझे ट्राई करना चाहिए. एवरी डे के लिए एक नई रेसिपी. सो दैट एक्साइटमेंट कि हाँ भाई चलो, I have got 14 days now with my family again. What am I going to do differently this time? What am I going to do which will make me use this time better? And one of the best ways to use your time is to spend time on yourself, to spend time at least half an hour, 45 minutes, 1 hour to read good books, to listen to good music, or to start doing some things that you wanted to do. बहुत दिनों से मन था मुझे क्रॉस स्टिच करने का, या बहुत दिनों से मेरा मन था पेंटिंग करने का, कि बट मुझे टाइम ही नहीं मिलता था. बट नाउ आई हैव द टाइम टू डू इट. अब मुझे बाहर जाने का उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं सोशल आउटिंग्स नहीं हो रही है. हाँ, घर पे काम थोड़ा बहुत बढ़ गया है because maybe our house helps are not coming, but it is also an opportunity to teach your children how to help you in the house. But how about using these 14 days again in a productive way? So think about some hobby of yours. Maybe it was singing, maybe it was dancing. Everything is available now online. हर एक चीज अब ऑनलाइन अवेलेबल है. सो व्हाई नॉट लुक फॉर दीज थिंग्स? व्हाई नॉट साइन अप फॉर सम कोर्सेज जिससे आप कुछ नई चीजें सीख सके? मे बी कोई बेकिंग की क्लास लेनी है, मे बी कॉन्टिनेंटल डिशेस बनाने की क्लास लेनी है. सो हाउ विल आई यूज दिस 14 days in a productive way? I'll give you my example. I'm very fond of doing cross stitch and that एंकर के वो जो आते हैं ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट. तो अब इस बार तो वी वर प्रिपेयर्ड कि मुझे पता ही था कि लॉकडाउन होएगा ही होएगा. मई का मंथ है, यूजुअली हम ट्रैवल करते हैं मई में. दिस मे वी कांट ट्रैवल, सो यू कम बेटर प्रिपेयर्ड. सो 1 week बैक आई वेंट एंड पिक्ड अप एंकर क्रॉस स्टिच वाला जो होता है, लॉन्ग स्टिच वाला. आई पिक्ड अप 2. आई पिक्ड अप 1 for myself and I picked up 1 for my daughter. And now every day, at least half an hour to 45 minutes, we sit down together and we do that long stitch. And she will also make one picture, I will also make one picture. I was not sure whether she'll be interested, but actually she's enjoying it so much. So we get that 45 minutes to 1 hour of just sitting. एक गाना उसके चॉइस का बजता है, एक गाना मेरे चॉइस का बजता है. और जैसे जैसे वो बचता है, बिकॉज वी आर इन अ रिलैक्स स्टेट, जब हम कोई चीज अपने मन का करते हैं, जब आप पेंटिंग करते हो या गाना गाते हो या डांस करते हो या खाना बनाते हो जो आप थोड़ा आपके रोज के खाने से हटके है, यू डू इट मोर इन अ हैप्पियर स्टेट. So when you are happier, you are more relaxed. So my conversations with my daughter are so much more better. Why? Because we are talking not about पढ़ाई में क्या करना है, तुम ये चीजें नहीं करती हो, तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, वैसी कोई बातें नहीं होती है. We talk more about life in general. I talk to her more about my experiences, how I was as a child, how strict my mother was with me, and how grateful I am to her that she was strict with me, because today so many things that I do in my life are disciplined only because my mother made me do it at a very young age. So ये type की जो conversations हैं, ये होना शुरू हो जाते हैं. So use these 14 days instead of looking at it and saying फिर से lockdown हो गया, 14 दिन फिर से ऐसे हो जाएगा. क्या उखाड़ लेंगे हम 14 दिन में?
कुछ नहीं उखाड़ लेंगे. अगर एक हॉलिडे कम ले लेंगे इस साल तो कुछ नहीं हो जाएगा. So what am I going to do? How do I change this negative situation into something positive? And that is something that I have a choice to do. या तो मैं बैठ के 10 जनों से वही बातें कर सकती हूँ, वही कोविड के मैसेजेस यहाँ से फॉरवर्ड वहां कर सकती हूँ, वही बातें सबसे कर सकती हूँ, या मैं देख सकती हूँ कि ये 14 दिन मुझे गिफ्ट मिले हैं, इन्हें मैं प्रोडक्टिवली कैसे यूज करूं. That is my choice. So this is what we are going to look at. Look at one problem or a negative situation that you have in your life and look for 10 things that you can do because it has been given to you, and 10 things that are good that come out of it, right? I will talk about last year when the lockdown started, and I'm earlier I was doing more of my travels, and I do these adventure holidays with children and as well as with adults. तो वो तो मार्च के बाद में पूरा स्टैंड स्टिल पे हो गया, बिकॉज वो तो होना ही नहीं है. एंड बच्चों के साथ तो ट्रैवल वापस मुझे पता नहीं whether it'll take another year and a half. It's going to take some time. So it took me some time to change my business, to understand now what will I do to work. So sabse pehle, what did I do? I signed up for a lot of courses. That is something which really helps when you don't know what you want to really do with your life. Start learning new things, because the minute you start learning new things, whether it is in the kitchen, whether it's at your workplace, wherever it is, the minute you start upgrading your own knowledge, new pathways start coming out. And honestly, had it not been the pandemic, had it not been for the lockdowns, I don't even think I would have ever imagined that I would be doing these kind of gratitude classes or more book reading classes like maybe Ikigai or Power or Ichigo Ichie or now Heal Your Life. I would have never been doing these classes. I would have never started teaching meditation. I would only be keeping it to myself. So honestly, the pandemic has given me so many new things to look forward to. So any situation comes with some things that you can get out of it. Now that is your choice कि आप उन चीजों को कैसे निकालते हो अपने लिए. So today's, it's very, very simple. Any one person जिसके साथ खिटपिट चल रही है, look for 10 things that you are grateful for, because like I was saying yesterday, every rose has some thorns. तो आप और मैं भी दूध के धुले नहीं हैं कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम में कुछ भी चीजें नेगेटिव नहीं है. आप में और हम में भी बहुत चीजें नेगेटिव हैं. Maybe we are more roses and we have a little thorns, but maybe there might be people who are actually clouds out there, but they definitely have a silver lining. So today we are going to look for the silver lining in any situation or in a person. That is all we are going to do for today. And I'm not saying it's going to be easy, but I'm saying it is definitely doable. Okay, so I'm not going to read the rest of the chapter because then it goes into an example. The Gautama Buddha quote in the chat box. If you are a part of our WhatsApp group, then the book is already there. And I would request you to read the book because it's an opportunity for you to revise the chapter. And I will not type out the quote. It's a pretty long quote. You can read it there. It'll give you a chance to revisit the entire thing. Now, there was one formula I wanted to talk to you about, and that is called ACR. And this is something that one of our past participants had shared with us, and it's a beautiful formula. A stands for accept the unchangeable. Okay, and this is something I'm going to type in the chat box. Accept the unchangeable. C is change the changeable. And R is remove the unchangeable. What does this mean? सबसे पहले तो ये समझना कि कुछ लोग या कुछ situations आपकी life में ऐसे ही रहेंगे. So you accept them the way they are. उनको ज़्यादा change करने की कोशिश मत करो because you are only spending your own energy. So you accept the unchangeable. If there are certain things that you can change in your life, then you change the changeable.
and then you know कि चलो भाई ये ठीक है, this is my daughter, I really want to change this about her because आगे जाके इसी को problem होएगी, so I keep doing this and I have to keep doing it for a long period of time. आज आपने अभी आप क्या कर रहे हो, you are only plowing the land, imagine it as a farmland, और आपको गार्डनिंग करनी है तो वो कितना टाइम लगता है उस सॉइल को पहले प्रिपेयर करने के लिए, फिर आप सीड्स डालते हो, फिर आप उसको नर्चर करते हो, whether there is sunlight, whether there is water, whether there is nutrients, all that is there, and then the plant starts. So you take a longer period of time to change the changeable. So have you done it long enough? That is what you have to ask yourself. If you say कि मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, have you tried it long enough? Just think about it. अगर the farmer would बोला कल रात तो मैंने बीज बोए थे, आज सुबह तक कुछ प्लांट ही नहीं होगे, ये क्या हुआ? Now that does not happen overnight. It takes a longer period of time. और जैसा सॉइल होएगा उसको उतना टाइम लगेगा. बहुत न्यूट्रिशियस सॉइल हुआ तो बहुत जल्दी सीड्स उग जाएंगे, बट अगर सॉइल न्यूट्रिशियस नहीं है तो उसको और ज्यादा प्लाव करने में ज्यादा टाइम लगेगा. And then if it comes to a certain point कि आपको लगता है कि this is just not working out, then you remove the unchangeable. So you remove yourself. फिजिकली शायद आप अपने आप को उस रिलेशनशिप से रिमूव नहीं कर सकते हो, बट मेंटली डेफिनेटली यू कैन रिमूव और कट ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम दैट पर्सन और थिंग. जैसे बोलते हैं ना, द वे यू आर is basically a sum total of the 10 people around you. So surround yourself with positive people, surround yourself with more positive thoughts, positive videos, positive language, positive books. So if you surround yourself with 10 people who are positive like you, your vibrations will automatically become higher and higher. जैसे बोलते हैं, like Buddha has also said that sangam sharanam gacchami. तो आपकी जो संगम, आपका जो संगत है, that is very, very important. So look around you. If there are too many negative people and if they are in your family, you can't do anything about it, then at least mentally cut off yourself from those energies. Do not feed into their energies. अगर वो complain कर रहे हैं तो उनके साथ बैठ के complain मत करो. उनको complain करना है because they are accept the changeable. You cannot change them. If you can change them, then start doing more and more gratitude towards that and change the changeable. And if both the things are not working, then at least remove yourself from the unchangeable. And there's a very nice example that this is Mahatriya's formula, and those of you all who know him, this is straight away from there, and it was shared by one of our participants in the previous batches, and it was beautiful and very nice example. आप एक ऑटो में बैठते हो और ऑटो वाला सिगरेट फूक रहा है, ठीक है, तो आपके पास 3 चॉइसेस हो सकती है. या तो आप एक्सेप्ट द अनचेंजेबल हो, तो आप बोलो चलो वो फूक रहा है, उसकी लाइफ है, उसका लंग्स है, जो उसको करना है वो करे. या आप चेंज द चेंजेबल, तो आप उसको बोलो कैन यू प्लीज स्टॉप स्मोकिंग द सिगरेट, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ एंड आई डोंट बी एक्सपोज्ड टू पैसिव स्मोक. अब उसके पास, ऑटो वाले के पास भी 2 चॉइस है. वो या तो आपकी बात मान लेगा, 90% ऑफ द टाइम वो बात मान लेते हैं और वो सिगरेट फेंक देते हैं. और अगर वो बोले नहीं मैडम हम तो सिगरेट पी के ही जाएंगे और सिगरेट पीते हुए ही ऑटो चलाएंगे, तो देन यू हैव अ चॉइस टू गेट डाउन फ्रॉम द ऑटो एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनचेंजेबल एंड टेक अनदर ऑटो. So this is how you understand the 3 things: accept the unchangeable, change the changeable, okay, and remove the unchangeable. Sorry, I think I've written one thing wrong there. Accept the, yeah, it's correct. Accept the unchangeable, change the changeable, and remove the unchangeable. Okay, so this is how you understand how are you going to work with negative situations in your life. So 2 assignments actually today. 1, you're going to watch the movie Pollyanna, and 2, you are going to take 1 person or 1 situation in your life and you are going to give 10 things to be grateful for, because you are still trying to change the changeable. You are still in the sea. Accept तो कर लिया है हमने काफी चीजों को, but कुछ चीजें हम change करना चाहते हैं. Okay, so that is what we are going to be
working on. Yes. So, Bhaiya, would you like to add anything? एक दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रिलेशनशिप जब भी होता है तो एक रहीमन का बहुत ही अच्छा कोट है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और अगर जुड़े तो भी गांठ पड़ जाए। तो इट इज ऑलवेज फर्स्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट वो जो धागा है वो टूटे ही नहीं, उसको इतना पॉजिटिविटी दो, उतना नर्चर करो कि वो टूटे ही नहीं, क्योंकि अगर वो टूट गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जुड़ेगा नहीं, और अगर जुड़ गया तो उसमें एक वो गांठ रहेगी, मतलब एक वो हिच दिमाग में सबके रहेगा। तो ये चीज अपने को हर सिचुएशन के लिए रखना ही है। रुचि ने सब कुछ बता दिया, देयर इज नथिंग मोर टू ऐड हियर। एक और चीज है, जैसे वो बोले ना कि 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, तो 14 दिन का टाइम है, 10 करके 1400 रुपए इकट्ठे तो लॉकडाउन में जरूर कर लेंगे। बट सिचुएशन ऐसी है कि वो 1400 रुपया खर्च करने के लिए आपको एक फोन कॉल चाहिएगा जो आपको नेगेटिव बोला या उसने बोला और आपने बोलना चालू कर दिया। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है ये 1400 की जगह 14,000 इकट्ठा करने का ट्राई करें, तो आप उसमें से अगर कोई सिचुएशन में चले भी जाते हैं तो एक दो अगर चला भी गया तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं, आई वाज मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव इन दिस होल सिचुएशन। लॉकडाउन एक्चुअली लोग उसको बहुत नेगेटिव लेते हैं, रुचि ने उसको पॉजिटिव लिया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। अब ये जो था इस लॉकडाउन में लास्ट टाइम हम लोग का 2 बार मिलना भी हुआ था, एक बार तो लास्ट ग्रुप के टाइम में भी, लास्ट डे वी हैड पुट इट टुगेदर, वी हैड गिवन अ सरप्राइज टू द कंप्लीट ग्रुप कि हम लोग साथ में भी थे क्योंकि हमारा नेक्स्ट कोर्स चालू होने वाला था। तो उस टाइम पे बोलते ना जब आपको सही लोग मिलते हैं और जब आप सही बात करते हैं, तो रुचि से ऐसे डिस्कस हुआ तो बोला भैया आप क्या कर रहे हो, आर वेवलेंथ्स आर मैच अ लॉट। मैं बोला तुम क्या कर, बोला मैं तो कोर्सेज कर रही हूँ। इसे बोला भैया, मैं बोला यार आई एम नॉट दैट टेक फ्रेंडली, थोड़ा सा गाइड कर। तो रुचि गाइडेड मी टू दिस यूडेमी एंड ऑल दिस कोर्स थिंग्स, एंड इसको मैं बोलूंगा दीज आर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। आई हैव डन अ डबल सर्टिफिकेट इन लाइफ कोच, एक मैंने किया था बिहेवियर टेक्निक्स पे और दूसरा मैंने किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो ये जो मेरे को मौका मिला, ये तो मैं बोलूंगा कि ये लॉकडाउन की देन है, ये जो पेंडेमिक की देन है हमारे लिए। तो इस पेंडेमिक में भी हम क्या अच्छा करेंगे ये हमको सोचना है। दूसरी बात जो एक और अपने ध्यान रख सकते हैं, जब हाउस हेल्प नहीं है, हमारा जो हाउस हेल्प था लास्ट टाइम पेंडेमिक में गया 4 महीने बाद आया, मतलब पेंडेमिक के टाइम हमने ही भेज दिया था कि भाई तुम भी अपने गांव जाओ, तुमको भी, तुम्हारे लोगों को भी तुम्हारी जरूरत है। He was so grateful कि भैया आप पहले, आप लोग ऐसे पहले लोग जो बोले कि तुम जाओ और अपने फैमिली के साथ रहो। लोग तो बोलते अरे तुम चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा, लोग तो छोड़ते नहीं है अपने हाउस हेल्प को। आप बोल रहे हो कि आप जाओ, वी विल टेक केयर, आपका सैलरी आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट। इस बार भी जब से हम बैंगलोर में, तो पिछले 15 दिन से ही ये न्यूज आ गई कि लॉकडाउन होगा, हफ्ता 10 दिन तो हो भी गया एक पार्शियल लॉकडाउन को, मंडे से फुल लॉकडाउन है। अब कल रात को ही मैं मधु प्रेरिका गर्वित अ फैमिली ऑफ 4, मैंने कल सबको बोला कि कल सुबह से या मंडे मॉर्निंग से गेम चालू होने वाला है। मैं 4 चिट बनाऊंगा। इट्स अ 3 रूम हॉल किचन फ्लैट, एक में 2 रूम क्लीनिंग है, दूसरे में 2 रूम मतलब रूम और हॉल क्लीनिंग है, एक में मॉर्निंग का बर्तन मांजना है, एक में शाम का बर्तन मांजना है, और ये 4 चिट में डाल दूंगा। जिस जिसके हिस्से में जो है वो कर लेना। डोंट टेक टेंशन एट ऑल कि अम्मा आई है कि नहीं आई है, इसी बहाने तुम लोग एक चीज सीखोगे भी। तो बोले पापा आप क्या ये सब हमसे काम कराते हो? बोला बेटा हम लोग जब स्काउट्स में थे, या मम्मी तुम्हारी जब हाउस कीपिंग करती थी स्कूल में, जो हम लोग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो स्काउट्स में तो हमको हमारा वो बैग भी खुद को उठाना पड़ता था, बर्तन भी खुद को मांजने पड़ते थे, टेंट भी खुद को लगाने पड़ते थे, उसमें रहना भी पड़ता था। तो ये तुम सोचो कि तुम 14 दिन के एक कैंप पे जा रहे हो, बाहर अपने कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर में क्या मजा करें ये तो सोचो। तो वो लोग मतलब दे एग्रीड एंड दे सेड यस दिस इज अ फैंटास्टिक आइडिया, इसी बहाने वी विल बी डूइंग थिंग्स टुगेदर। मैं बोला ऐसा नहीं है कि तुमको करना ही है, हम लोग रहेंगे साथ में, मम्मी रहेगी, क्योंकि अगर बाई चांस मेरा सुबह का बर्तन आ जाता है एंड इफ इट इज अ मंडे और अ ट्यूसडे जिस दिन मेरा मार्केट चालू है, तो बर्तन मैं मांजूंगा कैसे?
तो वो उस टाइम पे शायद वो चीट एक्सचेंज का, मॉर्निंग का तुम कर ले, शाम का हम कर लेंगे, जरूरत पड़ती नहीं है, बिकॉज आवर फैमिली इज सो एडजस्टेबल। फ्रेंकली बोले तो अपनी फैमिली इतनी एडजस्टेबल रहती है कि पापा आप छोड़ो ना, आप कोई अच्छे थोड़ी लगते हो करते हुए। मेरी डॉटर कई बार मेरे को बोलती है कि पापा आप ये क्या करने का बोल रहे हो, तो मैं बोला नहीं बेटा, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेट अस एंजॉय इट टुगेदर। तो ये एक चीज रहा। अब एक चीज जो है, जो ये ग्लैड गेम हमको सिखा रहा है, मतलब आई एम कमिंग टू द चैप्टर अगेन, इसमें व्हेन यू आर ग्लैड ना, आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली दिखेगी। जब आप देखो, अब अगर इस एग्जाम्पल में दूसरी तरह पुट करता हूं, अगर आप सच बोलते हो तो आपको एक ही बोलना पड़ता है ना, क्योंकि वो सच है, कोई चेंज नहीं है। और वही अगर आप एक बाई चांस झूठ बोल दो, तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको शायद 2, 4, 10, 20, 100 कितने झूठ बोलने पड़े। इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो तो आपको अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। अगर आप वो नेगेटिव में जा रहे हो, अरे कोई किसी ने मैसेज कर दिया कि भाई ये कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन कम मिल रहा है, अरे तो कहाँ से कम मिल रहा है यार, आपको वर्ल्ड या यूनिवर्स तो अबेंडेंस में दे रहा है ना, बी ग्रेटफुल टू इट। और 4-5 साल आज सुबह अपन ने ली, वी आर ऑल फ्रेश, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ, एक सच पे अटके रहोगे, एक ग्रेटिट्यूड पे अटके रहोगे तो 100 नेगेटिव दिखेगी ही नहीं। यू विल नॉट हैव टू फोकस देयर आल्सो। एंड इसके अलावा और तो कुछ खास है नहीं। ये जो हम लोग गेम खेल रहे हैं, अगर आप लोग वो गेम खेलोगे, पॉलीएना मूवी में जो ग्लैड गेम है वो साथ में खेलो जब आप बर्तन मांज रहे हो। आई एम सो ग्लैड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉश द यूटेंसिल्स, व्हाई नॉट टेक इट एज अ गुड थिंग। अब बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग भी ये बोलो, अब मेरा गेम मतलब आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे इन द मॉर्निंग जनरली। अब बैडमिंटन कोर्ट बंद है, तो मैं तो मधु को बोला कि भाई मेरा चिट तो तुम एक फिक्स कर दो कि झाड़ू मारने वाला, कि एक राइट स्मैश मारा, एक लेफ्ट स्मैश मारा, एक राइट मारा, एक लेफ्ट मारा, मेरे को फीलिंग भी रहेगी कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ और तुम्हारा घर भी साफ हो जाएगा। आई टोल्ड हर लाइक दैट कि भाई मेरा एक फिक्स ही कर दो ना यार, कोई भी चीज दे दो, कोई भी 2 रूम दे दो मेरे को, आई एम ओके विथ इट। मेरा बैडमिंटन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ऐसे झाड़ू मारूंगा, ऐसे झाड़ू मारूंगा, तो मेरा बैक हैंड और फोर हैंड, बैक हैंड और फोर हैंड चलता रहेगा। तो शी वाज स्माइलिंग कि हाँ आप तो ऐसा बोल के अपना एक फिक्स करना चाहते हो, और हम लोग के लिए आप बोल रहे हो कि अलग अलग करना है। सो दीज आर थिंग्स। अपने अपने घर में पूरा पेंडेमिक एंजॉय करिए। रुचि ने जैसे कहा है, बुक्स पढ़िए अगर आपको पढ़ने का शौक है तो। कोई कोर्स के लिए अपने आप को एक मिनट, जस्ट कोई कोर्स के लिए आप असाइन कर लीजिए, मतलब वॉट एवर योर हॉबीज। इस टाइम को जितना आप मस्ती से ले लोगे ना, क्योंकि ये 14 दिन वापस से, हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान नहीं दे, लास्ट ईयर दिया, इस बार फिर दे दिया। अगेन एक वन स्मॉल थिंग, आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो लास्ट टाइम मेरे साथ में एक एग्जांपल हुआ था कि मेरे को एक जन ने फोन किया कि सर ये तो पेंडेमिक हो गया, मार्केट क्रैश हो रहा है, आप लोग को शायद उसके मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू द फाइनेंशियल मार्केट, बट जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग कि थोड़ा सा आप लोग कभी अपने आपके हस्बैंड अगर उसमें है और कुछ बता रहे हो तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दे दें। लास्ट टाइम जब पेंडेमिक आया तो एक जो सेंसेक्स जो होता है, जो मार्केट का अपना एक माप तोल दन देता है, वो 13-14 हजार से गिर के 8 हजार पे आ गया। लोग डर गए, लोगों ने माल बेच दिया, लोग बहुत सारे बोलते ना मतलब एकदम ही नेगेटिव हो गए थे। वहां से इसी साल में वापस से वो न्यू हाई टच कर लिया। तो अभी मेरे को लास्ट वीक, क्योंकि अब ये पार्शियल लॉकडाउन था, तो काफी जन बोले कि सर इस बार क्या करना है, तो बोला भाई इस बार तो अपॉर्चुनिटी मिली है, अब तो डाल लो, क्योंकि अब वापस से जब ये रिबाउंड करेगा तो आपकी वो रैली नहीं छूट जाए। So these are the things which we tell them in a positive way कि भाई you have missed earlier, this time again you have got a chance. So similarly this time again you have got this 14 days, enjoy it to the fullest, enjoy it with your family, your friends, जहाँ पे भी आप रह रहे हो। कुछ लोग मतलब अगर सपोज घर पे नहीं है, हमारे जैसे अपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो बच्चे हैं जो अपने फैमिलीज को छोड़ के यहाँ पे पीजीज में रहे, उनको भी बोला यू एंजॉय द टाइम। सो एंजॉय दिस 14 days, डू प्ले द ग्लैड गेम टुडे। हम लोग कल और परसों जो प्रैक्टिसेस में आएंगे तो मेरे कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं जो मैं आप लोग को बाद में दूंगा, कल या परसों दूंगा, कि ये जो चीजें प्रैक्टिसेस बताई है ना, ये प्लीज करे। इसका एक ओवर आउटकम जो है वो अलग है, आप लोग खुद फील करेंगे, यू विल एंजॉय इट।
I think we should start with the question and answers. It's already 8:26. Yeah. Just saw the time. There are no questions. There was just one change that I had to make to the quote, which I've already put it over there. The R stands for remove the unacceptable, something which is not acceptable to you. So you remove the unacceptable. It was not unchangeable. So that was my mistake. I have just put that down over there. Rashmi ji, you want to share something? Yeah. Just 1 second. I'll just take this question. Give some tips. Kisme lagana hai. Is that for bhaiya? I'm not sure, Sunita ji. Hanji? What? I didn't see that question. I just saw the question. Give some tips. Kisme lagana hai. Okay. Aarti also wants to share. So we'll just start with the sharing. I think, Sunita, you have to get in touch with him personally and at a professional level. Hire him as your consultant and he can help you out with that. Okay. Yeah. Rashmi, go ahead. Please share. Yeah. I'm from Bombay. And Ruchi, जब आपका मैंने join किया था first class, उसके बाद actually I used to go to GD Somani to teach this, जो बाई के बच्चे होते हैं उन लोगों को पढ़ाने जाती थी मैं. तो once I was going to this thing from taxi, तो क्या हुआ taxi में that बंदा was having cigarette. तो वो पी रहा था, ठीक है, 5 मिनट बाद and he throw, वो फेंक दिया. उसके बाद मैंने बोला, चाचा आप ये सिगरेट क्यों पीते हो? बोले बेटा खाना खाने के बाद थोड़ा सा ये ले लेता हूँ तो मेरे को एसिडिटी कम हो जाती है. तो आई सेड अच्छा ठीक है. तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने बोला एक बार गाड़ी रोकिए. गाड़ी रोक के वहाँ मेडिकल शॉप थी, मैंने वहां से एक जेलुसिल निकाल के खरीद के लाके उनको दी. मैंने बोला आप ये 1 हफ्ता ट्राई कीजिए, अगर आपको लगेगा कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की जरूरत है तो आप जरूर पीना, अदरवाइज मत पीना. तो इतनी सी बात थी. और नॉर्मली थोड़े आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़े दिन आपके फैमिली मेंबर आपको देखेंगे, बाद में कोई नहीं चाचा देखने को आएगा आपको. He said okay. और जैसे ही जीडी सोमानी आया तो मैं उतर गई and he came, उतर के वापस आया तो मैं डर गई क्या हुआ. He was literally touching my feet as he said and he was not taking money. I said नहीं चाचा ऐसा मत करो, ये पैसा रखो, ये पैसा आप जेलुसिल खरीदना. And you won't believe, after 15 days he called back. बोला मैं बेटा मैंने सिगरेट छोड़ दी है और मैं जेलुसिल ही खाता हूँ. Wow, amazing. So after listening to your session, that उसके बाद 1 हफ्ते बाद ये मेरे साथ हुआ था. तो I would like to share you this. Thank you so much, Rashmi. Superb sharing. Thank you so much. What a gratitude. And आंखों से आंसू आ रहे थे कि बाप रे वो ऐसे फोन किया कि मैं छोड़ दिया सिगरेट और मैं जेलुसिल ही खाता हूँ. तो I was so glad कि चलो कोई एक बंदा तो सही निकला. Absolutely. Yeah. Sheelu Didi has started her glad game. She's already written in the chat box. I'm so glad for being associated with Ruchi and Nandan's fantastic sessions. How nice. Lovely, Didi. Yes. What about Aarti? Aarti, I can't see you on my screen. And Farzana has also raised her hand. Farzana ji ने भी raise किया है. कल उनका sharing रह गया था. Yes, yes. आरती जी अगर अनम्यूट हो रहे तो पहले उनको कर ले, फिर फरजाना जी को ले लें, या फरजाना जी can say first? No, I can see Aarti now. Go ahead, Aarti. Okay. Yeah. I would like to share that I have a group of friends. We are friends for past 25 years, and we run a kitty group which is called Wildcats. And I started noticing that in this group, everybody's family, something or the other was happening, and they were going on posting, or they needed help, and अगर help नहीं मिल रहा था, oxygen नहीं मिल रहा था, किसी को beds नहीं मिल रहे थे, and it was for all loved ones, so everybody was getting upset, and all of us were trying to help each other on the group, whatever possible. तो मैंने कहा ये तो बड़ा sad सा हो रहा है group, and ये इतना happening group था, I won't let it go waste. So what I did is I used gratitude as a game. I told them I will post something on the group. We will make it like a 21-day challenge activity. And I said, आज first है, आज मैं अपना task नहीं, activity डालूंगी group पे, और सब लोग उसको follow करेंगे. Like जैसे मैंने डाला कि write 10 gratitudes for the day and post it on the group, and hereafter make sure you continue it for 21 days and see how you feel, because there's a lot of unwanted things happening around. So, just to make everybody's spirit, little higher. So they all said, okay, fine, we'll start it as a game. So I started कि आज group पे 10 gratitude सब लोग लिखिए, ठीक है? It can be to God, it can be to your servants, it can be to your mama, to your mother-in-law, to anybody, or even for a avla ka juice that you get to in your hands in the morning, your didi makes and gives you and things like that. This is how we started off the game. You won't believe. The participant was there
so much participation इतना ज्यादा हो गया, उनको इतना मजा आने लगा, they said और क्या. So I said ठीक है, I said the task doesn't complete here, the activity doesn't get over here. Since we all have done today's gratitude, I request everybody अपना एक किताब बना लीजिए और 21 days journey of gratitude लिखना शुरू कर दीजिए. आप लोग को रोज ग्रुप पे पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बुक में लिखिए और 21 days के बाद देखना कि how you people feel from within. Because bahar, you also know how Chennai is also everywhere, it's very sad right now. So एक दिन का तो खत्म होगा gratitude, and then said अब next क्या? I said next अब हम ये खेल खेलेंगे इसी gratitude को लेके कि आज मैंने फिर नेक्स्ट डे किसी और को नॉमिनेट किया. मैंने कहा आज आप अपना लिखिए कोई भी एक्टिविटी. तो उन्होंने लिखा कि अपने सिबलिंग्स के साथ फोटोज डालिए. ठीक है, तो एवरीबडी स्टार्टेड पुटिंग, किसी ने वीडियो डाला, किसी ने कुछ मेमोरीज डाल के, and everybody automatically started saying I'm so grateful, I'm so thankful that I had such a nice childhood with my brother, with my sister, purane all that started happening, and automatically group pe thank you बढ़ता गया. I myself couldn't believe it. Everyone, I mean, out of 21, 12 members were very active, and out of the 12, 10 people wrote, we are thankful to Aarti, we are grateful to Aarti for starting this. So, and I accepted it very gracefully because it is something which I really want to spread everywhere. So, मुझे खुद इतनी खुशी मिल रही थी क्योंकि मैंने ये gratitude, ये सब मैंने 3 साल 4 साल पहले शुरू कर दिया था. So, ग्रुप में भी चेंज आ गया, पूरी एनर्जी बदल गई ग्रुप की, एंड सबको एक खुशी मिलने लगी. एंड कल रात we have already started this, and I think आज 8th day है, एंड कल सारे मैसेज करते हैं कि ग्रुप की रूपरेखा ही बदल गई है. जहां हम इतना सैडनेस रोज पढ़ रहे थे, एंड ऑटोमेटिकली यू वोंट बिलीव, जिस किसी को बेड चाहिए, जिस किसी को ऑक्सीजन चाहिए, जिस किसी को ऑक्सीमीटर चाहिए, जिस किसी को सिलेंडर्स चाहिए, जिस किसी को जो भी चाहिए, रेमडेसिविर, ये जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस चाहिए, कुछ नहीं मिल रहा था ना. ट्रस्ट मी, आफ्टर वी स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड, एक बंदे को एक पहुंच आ गई है, and we all are able to help each other. You won't believe, and इतने genuine हमें sources मिले हैं कि जिसके लिए भी help चाहिए ना, हम ग्रुप पे डाल देते हैं, and कोई ना एक बंदे का कांटेक्ट दे देते हैं. जैसे रेमडेसिविर, my brother is able to help, तो मैंने बोला contact my brother. Someone wanted cylinders, he said contact so and so. ऐसे करके trust me, सबके काम भी हो रहे हैं. जो भी ग्रुप में कुछ डाउट डालता है, see, this is like, I'm not joking. ये मैं तो 4 साल से कर रही हूँ almost, but I'm just sharing it with this whole group because we need to believe in what we are doing. Yes. Very important, and it is really, really, really magical. So I wanted to share this. Thank you so much, Aarti, and you've given such a good idea because all of us are a member of so many WhatsApp groups. Okay, so many WhatsApp groups, and if you want to really bring about a change, it's like a ripple effect. So you start small, but you have no idea where all it is spreading and how many people are getting benefited with that. And this one idea of yours that you've shared today, there's still 82 people who are on call, and I don't know how many people who are still watching it on WhatsApp. Even if 10% of us, which is 8 of us, started in 8 respective WhatsApp groups, can you imagine how much of a change it will bring about? So we're just starting small, but it can really magnify to something so much bigger. I'm so glad that I could give back something because I've been learning from so many people. And thank you, Ruchi. Thank you, Rajan Bhaiya, because even though I've done the course already, I keep visiting your gratitude because every time I learn something new, it's not the same thing. So I wanted to do my bit for everybody. So that's how it is also very important that whatever you learn, you don't keep it to yourself. It can grow only when you share. Yeah. It's also your responsibility to make at least 5 more people get into it or teach 5 more people. That's so lovely. Thank you so much for sharing. Thank you. Yes, Farzana ji. Yes, please unmute yourself. Yeah. Ma'am, this is last year's experience. As I'm a teacher, pandemic maids are not going to come, so I like how sir said, you all have a game. I had also planned a game. In that game, it was 5 things I will do. I'm mother of 2 kids, so both the growing kids. So 5 things they will do
for their own self, and 5 things for mama. Hmm. So in 5 things for mama is like helping, and 5 things my husband has to do. So here, like, it was a time where he's also here, so he will get the marketing stuff, because we were not allowed to go out. Kids are not allowed, and they were saying, Farzana, can you just touch your screen again? Your video has gone. I think if you're on the phone, now it's okay. Yes, go ahead. So then like I had planned out the game in this in the, like, we had dates and 5 things, and every day we have to write this task is done, like bedding, cleaning their own books, arranging the things, activity what they do. My kids love drawing and painting, so then they make it a mess. So like it was everything they have to do, and once they do it, they have to write it's done, it's done, it's done. And who does it on time properly, then one is the winner. And who is the winner? We at the end at 9:30 we play a Ludo game. So who is the winner is the first person to play, like first person to get a chance. So everybody was doing it, and now it was for that time. It's become a routine. So nice. So nice. it's Lovely. become a routine for a year. Yeah. So when you told today, like, you know, your mother has taught, and so somewhere even I was like, yes, even I didn't have this, how it will work, but it is doing. As like I'm a teacher, and we think things should be go properly, because what happened when I will share my experience I'm in even I'm born and brought up in a joint family. And when any where we have any occasion, so many people visit our house, so they open our cupboard. So my mummy used to always say, so when anybody enters the house, they open the cupboard and see, and if you keep the clothes very neatly, and so it gives the impact what discipline you have. Yes. Yes. So that like, so I also try to, I don't know how much, like whatever maybe that what it was, but I also keep that practice. And my son keeps his wardrobe very tidy, more than me. How because I don't get the time to manage up things, but he keeps it very nicely. So here somewhere that discipline is also there. That is what I wanted to share. Like with the game I had started, and today it's become a habit. Very nice. Thank you so much for sharing, Farzana. And you know when the children see us doing these things, they automatically start doing it themselves. इसीलिए I have a lot of parents who come to me and say, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, बच्चे पूरे time TV पे लगे रहते हैं या पूरे time phone पे लगे रहते हैं. And I just ask the parents one simple question: आप कितना time निकालते हो social media पे? आप कितनी देर रहते हो WhatsApp groups पे? आप अपना time देखो और check करो what are you doing. So I, for a simple thing, that I did not buy one anchor ka long stitch just for my daughter. I bought one for myself also, and I said, you and I will sit down and do it together. So I do not thrust things on the child, but we are doing it together. That makes a very big difference. जहां आपने बोला कि तुम्हें ये करना है, कि तुमको हरी सब्जी खानी है, तुमको न्यूट्रिशियस खाना खाना है, और आपने फिर शाम के लिए अपने लिए एक पिज्जा ऑर्डर कर दिया, so you are not giving them the right signal. So whatever you want them to do, you have to start practicing it first yourself. And dekhte dekhte they will pick it up. They may not agree to it, they may not do it in front of you, but I can tell you, I've run hundreds of camps. Children, when they come on camps, I can easily make out कि किसकी माँ क्या सिखाती है, because आपके सामने नहीं करते हैं, बच्चे पीछे से करते हैं. It comes out so clearly, and when I go back and tell the parents your child is so organized, they say impossible, घर तो इतना गंदा रखते हैं, मैं सारा दिन इसके पीछे पड़ी रहती हूँ. And then I tell her कि तुम सारा दिन पीछे पड़ी रहती हो, इसलिए वो कैंप पे हमको दिखता है, तुमको तुम्हारे सामने नहीं दिखता है. So just keep that in mind, that the kids pick it up. Always they pick it up, but you have to be the right example for that. You cannot preach something and practice something else. They can immediately make it out, and that won't work. That will just not work. Okay. So on that note, we're going to play the GLAD game, and we're going to make the Sunday a no complaint day. And we're also going to think about one person, or we're going to think about one situation and give 10 things that we are grateful for that situation or that person. Okay. Thank you. I just want to say something here. आज मेरे screen पे सवीर मल्होत्रा, if everybody के screens अगर on है तो देखो, सवीर मल्होत्रा is a small, मतलब he is I think a teen child
जो इतना इंटरेस्टिंगली पूरा सुन रहा है, उसने अपना वीडियो बंद कर दिया, शायद शर्मा गया होगा, बट आई हैव सीन दिस कि वो उतना सा बच्चा भी ग्रेटिट्यूड में आने का ट्राई कर रहा है. व्हाट अ ग्रेट थिंग, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट. आई एम सो ग्लैड कि ये बच्चा भी मतलब, एंड वो बच्चा ही था जिसने आपको लिखा था कि मैडम वो बुद्धा का कोट प्लीज आप शेयर कर दो. Okay. So Saveer, I hope you're a part of the WhatsApp group. If you're not a part of the WhatsApp group, then I'm just going to put my 1 second. I am representing my mom. So great. Representing his mom. So Your mom should be a part of the WhatsApp group, I'm sure. So the book is available, Saveer. I would really like you to go back and read that chapter. Take that quote out that you liked so much, and please write it down somewhere so you can see it on your own. Okay, and that'll be beautiful. Thank you so much for that. Thank you. And it's almost 8:45. I think we all have to get ready for our Mother's Day celebrations, to do some and to enjoy some. So let's get going, and we will see you all tomorrow at 7:30. Thank you. Thank you, Dee. Thank you. Thank you.